Now we are starting with the helping or the auxiliary verbs. Helping verbs, as the name suggests, help the main verbs to change their forms according to the tenses, voice and other aspects. हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बच्चे, जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स ये जो मेन वर्ब है उसको ये हेल्प करते हैं. हेल्प द मेन वर्ब टू चेंज देयर फॉर्म्स. जो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं उन फॉर्म चेंज करने में अकॉर्डिंग टू द, कई बार टेंस के अकॉर्डिंगली, वॉइस के लिए या फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं उनके अकॉर्डिंगली. जब हमारे मेन वर्ब्स फॉर्म को चेंज करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स उनकी हेल्प करते हैं. नाउ ही विल कम बैक फ्रॉम लंडन नेक्स्ट वीक. ही विल कम बैक है ना, सो इट इज अ फ्यूचर टेंस. सो हियर विल is the helping verb. Sometimes the main verb does not require any helping verb to change according to the tense. तो कई बार क्या होता है, हमारा जो मेन वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब की उसको जरूरत नहीं पड़ती है. He came back from London, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पास्ट टेंस में हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी. He came back, हमने सिंपल जो हमारा मेन वर्ब था उसकी ही फॉर्म चेंज कर दी मेन वर्ब की, और हमारा हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो ही केम बैक जब हम पास्ट टेंस में यूज़ करें, ये हम ही कम्स बैक फ्रॉम लंडन ऑन मंडे मीन्स इट्स अ शेड्यूल है उसका. ये ही कंटिन्यू रेगुलरली कम्स, सो इट्स अ फ्यूचर शेड्यूल. सो ही कम्स बैक, अगेन वी यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म. कम्स बैक फ्रॉम लंडन ऑन मंडे at 7 in the morning means every Monday he comes back, so it is his schedule. So here also we don't need any helping verb. Two groups of helping or auxiliary verbs. हम helping verbs को auxiliary verbs भी बोलते हैं. Group 1 में आ जाता है be, do and have. be verbs is, am, are. ये हमारे present के आ गए. was, were, ये हमारे पास्ट के आ जाते हैं. बीइंग और बीइंग ये भी हमारे बी वर्ब्स हैं. ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग. डू वर्ब्स हमारे हो गए डू, डज एंड डिड. डू, डज एंड डिड. हैव वर्ब्स हैं हैज, हैव एंड हैड. सो ये आ गए हमारे ग्रुप 1 में. बी के बी, डू एंड हैव ये हमारे ग्रुप 1 के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. बी, डू, हैव. बी के आ जाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग. डू वर्ब्स डू, डज एंड डिड, हैव, हैज, हैव, हैड. सो बी इज एडेड टू अदर वर्ब्स टू मेक प्रोग्रेसिव और पैसिव. तो बी हम कहाँ लगा जाते हैं, जहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म हो और पैसिव फॉर्म हो. प्रोग्रेसिव लाइक इज इट पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स पोरिंग कैट्स एंड डॉग. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे सेंटेंस का. pouring here means raining. Okay, so it's in the interrogative form. Is it pouring cats and dog means क्या बारिश इतनी तेज हो रही है. जब बारिश तेज होती है, when it rains so heavily, we say cats and dogs. We use this phrase cats and dogs. So here we are using the be is form. Is it pouring cats and dogs means is it raining so heavily. pouring progressive form आ गई. still going on, continuous. I am, again we are using the be present tense form. I am waiting for you means you are doing waiting for someone ना, so come quickly means जल्दी आइए. passive form, यहाँ हमने progressive form के examples देखे, यहाँ passive form. they were caught in the traffic. passive means एक्टिव पैसिव जो वॉइस होती है ना, उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव वॉइस. दे वर कॉट इन द ट्रैफिक. तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म में यहाँ पे वर आ गया और कॉट आ गया. पैसिव फॉर्म में शी वॉज इंटरव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स. अगर हम एक्टिव में लिखते एक्सपर्ट्स इंटरव्यूड हर, राइट, बट हियर इट इज इन द पैसिव फॉर्म. सो शी वॉज इंटरव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स. सो हियर वी आर यूजिंग be form, was and were. Clear to all? Now we move to the next page.
Here we come with the do forms. Do is used to make questions, negatives, emphatic forms of main verbs. Do हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमने क्वेश्चन बनाना हो या कहीं पे नेगेटिव यूज करना हो या एम्फेटिक फॉर्म करना हो. एम्फेटिक होता है बच्चे जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस देते हैं, किसी चीज को हम एम्फेसिस देते हैं. ओके, उसको एम्फेटिक बोलते हैं. क्वेश्चंस लाइक हमने क्वेश्चन बनाने हो, डू यू वांट दिस, डू यू नीड एनी हेल्प, सो हियर डू इज यूज्ड. नेगेटिव फॉर्म, डू का पास्ट टेंस फॉर्म आ गया, आई डिड नॉट अटेंड हिज फ्यूनरल. डू का नेगेटिव फॉर्म एंड नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, आई डिड नॉट अटेंड हिज फ्यूनरल. I did not go to school today. So again it is a negative form. Emphasis, if we are giving some stress on something. She does enjoy music. Means उसे music बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे हम किस पे stress दे रहे हैं? Music पे. She does enjoy. Means main verb के साथ हमने does लगा दिया, do की form लगा दी, तो emphasis आ गया. अगर हमने क्वेश्चन फॉर्म बनानी हो, नेगेटिव फॉर्म बनानी हो या एम्फेसिस फॉर्म बनानी हो तो देयर वी यूज डू फॉर्म्स. डू, डिड एंड डज. व्हेन वी हैव टू गिव सम एम्फेसिस ऑन समथिंग देन वी यूज दिस. लाइक इफ आई से डू कम टू माई पार्टी, राइट? सो हियर आई एम गिविंग एम्फेसिस दैट you surely you do that thing. If we are giving some emphasis or stress on something, that means we are using the do forms. Do, did and does. Have is used to make perfect forms. Now, if I say, have you washed your clothes? Arun has completed reading this novel. Have you washed your clothes? Here we are using the present perfect tense. Here we are using the interrogative form. So Arun has completed reading. Here we are giving the statement, declaring something. Arun has completed. So here we are using the perfect form, perfect tense. Now we will do the exercise. Use the appropriate auxiliary verbs to complete the following sentences. I dash calling him but he did not pick up my call. What will come? Yes. I kept calling him. I have used, we are talking about the past tense, no? So here because here the past tense is used, did not, so here we have changed the form of the verb. I kept calling him. Rohit dash cleaned up his room and now he is going to play. Rohit has cleaned up his room and now he is going to play. People dash like their favorite actors entering politics. People, now it is an emphasis. We are emphasizing on something, so here we will use the word people do like their favorite actors entering politics. Arun dash left the job since last month. Arun has left the job since last month. She dash not play the game of cards. She now what? She did not play the game of cards. Yeah, here we can use this also. She does not play the game of cards. India dash won the match by 6 wickets. India has won the match. The machine dash comply with the specifications I required. The machine does comply. Does ही आएगा बच्चे. Yes. Machine does comply with the specifications I required. Dash your friend meet you last week.
ये बंद हो गया था. So the machine does comply with the specifications I required. Did your friend meet you last week? The audience are growing impatient. Begin the show. She should dash treated by a specialist. She should be treated by a specialist. Group 2 modals. Modals बच्चे we use like when we have a possibility, willingness, obligation, ability, permission. When we talk about these things, then we use the modal verbs. For example, now look here. Modal verbs can, could, will, would, should, may, might, must, ought, to, need, dare, used to are all called as the modal verbs. Modal verbs join with the main verbs in their basic form to show different meanings. ये जो होते हैं modal verbs, ये बच्चे main verbs के साथ join होके basic form को different meanings show करते हैं. जैसे कि कई बार willingness, sometimes there is a willingness, sometimes it's a possibility. Sometime obligation, ability, certainty, permission and prohibition. Prohibition is किसी चीज़ के लिए मना करना. Permission, you know. Certainty, when you are sure about something. Ability, you are able to do something. Obligation is when someone does something for you and you are obliged for that. Possibility, if the probability is there. Willingness, when you are doing it with your own will. So here the willingness is showing. I will pick you up at the station means he is willing to pick you up at the station. वो अपनी मर्जी से आपको पिक करने आ रहा है. That means ये उसकी willingness दिखा रही है. तो यहाँ पे will लगेगा. It may rain. Possibility है, probability है. It may rain. So here we use, when there is a possibility, we use may. You must complete the day's work before you leave the office. It's your moral duty. Like you have to complete the day work before you leave the office. It's the obligation as well as your moral duty that you have to finish your work. So there we use that if I say that you must obey the traffic rules or you must obey your parents, that is your obligation as well as your moral duty. So there we use the word must, modal. I can trek the mountain for one whole day. Here it is showing your ability, right? I can trek the mountain for one whole day. Means here you are showing your ability to trek the mountain for one whole day. Now the next is, may I use your PC to send an urgent email? Here you are seeking a permission. आप किसी से permission ले रहे हैं. So यहाँ पे आएगी आपकी may यूज़ करते हैं जब हम एकदम क्या बोलें उसको कि सॉफ्टली अगर हम कुछ परमिशन लेना चाह रहे हैं. दैट इज वी यूज मे. देन द लास्ट लाइन इज, यू कैन नॉट मीट द प्रिंसिपल विदाउट प्रेयर अपॉइंटमेंट. नाउ इट्स अ प्रोहिबिशन. मीन्स आपको मना किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए. यू कैन नॉट मीट. देयर वी यूज कैन, कुड इज द past form of the can. So here we will use you cannot meet. It is in the present tense, so we are using it cannot. You cannot meet the principal without prior appointment means आपको पहले appointment लेनी पड़ेगी, permission लेनी पड़ेगी, otherwise you cannot meet the principal. Now we'll do this exercise number 5. Use suitable modals to complete the following sentences. Politicians with the record of crime dash contest in this elections. Now what politicians with a record of crime, here they are saying कि जिनके politicians जिनका record है, criminal record है, उनको क्या करना चाहिए? Contest in the election means what you will write here. Prohibited होना चाहिए ना यहाँ पे. तो यहाँ पे होना चाहिए politicians with record of crime cannot contest in this election. Don't book the ticket for me. I dash not join you for this show. I may not join you for this show. Means उसका पक्का नहीं है वो आ पाए या नहीं आ पाए. She is frowning. She dash angry, be angry with you. She is frowning. She must be angry with you. Must be means यहाँ पे आप थोड़े से
सर्टन है क्योंकि वो फ्राउन कर रही है, मीन्स फ्राउनिंग इज व्हेन यू रेज योर आईब्रोज। जब अपने आईब्रोज चढ़ाते हैं दैट मीन्स यू आर फ्राउनिंग, तो इससे आपको पता चल रहा है कि वो मेरे साथ एंग्री है। यू डैश फुलफिल दीज कंडीशंस इफ यू वांट अ ट्रिप। नाउ हियर इट्स अ ऑब्लिगेशन, सो यू मस्ट, इट्स योर मॉरल ड्यूटी। Bill dash fight a 20 round contest without much ado. Bill will fight means he can do it. Dash, you join us for a cup of tea. Will you join us, or what can we use? Will you join us for a cup of tea? Could you join us for a cup of tea? या can you join us? Can you join us? और will भी लग सकता है, will you join us? Come, I dash help you lift this carton. I will help you. Sam dash not worry about anything as he works very hard. Sam may not worry because he is already working hard, so he may not worry. I don't dash to talk back like this to my parents. I don't need to talk back. I don't dare to. Dare means आपको you should never talk back to your parents like this, means आपने ये daring भी नहीं करनी है. Dash, you dash bring your own bed for the camp. You should or you can. So with this we complete this chapter. All of you complete this in your books with the writing part. I have already told you that how much you have to do. I have told you up till here. Then you do this exercise in the book only, and then you write about the change with the link verbs. You write this, give the definition and the example like this only, and then you come to the helping verbs and auxiliary verbs, give the definition and 1 or 2 examples. Group 1 we do have, and then group 2 you tell about the modals and give few examples. That's it. And then I will send you the exercise that you will do in your notebooks, but you complete your work in your books.